everyone, I'm Maitri and today we'll discuss about the types of questions asked in IELTS Listening Module. Though the first question is multiple choice question. इसमें we have two options. One is choose any one from the three options given or choose any two from the five options given below. Let's just have a look on the do's and don'ts. Do's में you have to listen carefully to the audio क्योंकि audio जो है वो एक ही बार प्ले होगा एंड हाईलाइट द वर्ड्स. जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तो आपको वर्ड्स जो है वो हाईलाइट करने रहेंगे ताकि you can get a clarity about the question and be careful on hearing but and however क्योंकि जब भी आपको but और however सुनाई देता है so there is a information coming ahead them तो उसे भी हम ध्यान से सुनेंगे. Don'ts are don't write the first answer you hear. पूरा ऑडियो अच्छे से सुनेंगे and then we'll write the answer and do not stuck to one question क्योंकि वो क्वेश्चन में आप अटक जाओगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि आगे जो क्वेश्चन है उसके भी आप आंसर सुनने मिस कर जाओ. तो ईदर यू कैन लीव दैट क्वेश्चन और बाद में यू कैन आंसर इट और जो भी आपको सबसे करेक्ट आंसर लग रहा है जिसके करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं यू कैन write that answer. Let's talk about the strategy. Strategies don't use the method of selection. Selection वाली method नहीं use करेंगे. जैसे you will read the first option और आपको ये लग गया कि okay यही सही आंसर है तो आप दूसरे read नहीं करोगे and it might happen कि वो correct ना हो और आगे वाला कोई option correct हो. Instead of this we'll use the method of elimination. तो इसमें we'll read each option और जो भी आपको गलत लगेगा तो उसको एलिमिनेट कर लेंगे और अल्टीमेटली जो भी लास्ट बचेगा दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर. बी पेशेंट, डोंट रश टू द आंसर. अगर आपने कुछ सुन लिया लाइक पहले ही डोंट जस्ट राइट इट अप. पूरा ऑडियो सुनेंगे अच्छे से एंड देन राइट योर फाइनल आंसर. और अगर आंसर लिखने में पता नहीं चल रहा हो तो अब यू विल मेक अ गेस कि इसमें से कौन से आंसर की करेक्ट होने के हाईएस्ट चांसेस हैं एंड देन यू कैन राइट दैट आंसर. Let's have a look to an example. पहले सारे questions read करेंगे. First question, Dave Hadley says that a computer system has. Computer system में क्या होना चाहिए? First is too many user मतलब उसके बहुत सारे users हैं या फिर option B never worked well मतलब वो कभी भी उसने अच्छे से काम नहीं किया है never. And C is become outdated. पहले अच्छे से काम कर रहा था अब अच्छे से काम नहीं कर रहा है. The next question is the main problem with the computer system is that computer system का main problem क्या है? A is too slow वो बहुत ही ज्यादा slow है और is it B stops working काम करना बंद कर दे रहा है और is it option C displays incorrect data जो डेटा है वो गलत दिखा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम टेबलिंग हैज बिकम एन इश्यू. टाइम टेबलिंग जो है वो इश्यू बन गया है. दैट क्यों इश्यू बना है? ऑप्शन इज दैट इट्स नॉट इनफ टाइम फॉर एनीवन टू डू इट. किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो उस चीज को कर पाए पूरा. ऑप्शन बी इज द सिस्टम डज नॉट हैंडल कोर्स ऑप्शंस. जो कोर्स के ऑप्शन है वो सिस्टम हैंडल नहीं कर पा रहा है. एंड ऑप्शन सी इज द कोर्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. जो कोर्स है वो बार बार चेंज होते जा रहा है. Then to solve the timetabling issues, रणधीर suggested. तो ये टाइम टेबल का जो इश्यू है उसे सॉल्व करने के लिए रणधीर क्या सजेस्ट कर रहा है? स्टूडेंट शुड क्रिएट देयर ओन टाइम टेबल. जो स्टूडेंट है उनको अपना टाइम टेबल खुद बनाना चाहिए और they should have someone to assist him. देव को किसी को रख लेना चाहिए काम पे जो उसको असिस्ट करेगा. और इज इट द नंबर ऑफ कोर्सेज शुड बी रिड्यूस. जो कोर्स का नंबर है वो हम कम कर देंगे. रणधीर सेज दैट अ न्यू सिस्टम में. रणधीर क्या बोल रहा है? न्यू सिस्टम जो है वो कैसा होगा? तो ऑप्शन इज नीड टू बी ट्रायल. उसको ट्राई करना पड़ेगा. या ऑप्शन बी स्टिल हैव प्रॉब्लम्स. नए सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकती है. और ऑप्शन सी बी मोर इकोनॉमिकल. जो इकोनॉमिकल हो मतलब जिसकी प्राइस जो हो वो कम हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम विल टेक. जो अभी सिस्टम है करंटली उसे इंप्रूव करने के लिए कितना टाइम लगेगा? ए इज फ्यू वीक्स कुछ हफ्ते लग सकते हैं
ऑप्शन बी इज 4 to 5 months, 4 से 5 महीने लग सकते हैं, और ऑप्शन सी इज 9 months. तो इस तरह से हम क्वेश्चंस अच्छे से रीड कर देंगे, अच्छे से we should understand the questions properly. Then let's us listen to the audio. Hello, I'm Randy Agotra from the Technologies Department. Ah, yes, good. I'm Dave Hadley. Thanks for coming to see me. That's okay. I believe you want us to do some work for you. Yes, that's right. I'm responsible for student admissions to the college, and I use a computer system to help process student enrollments and to do the timetabling. But it really doesn't suit the way we work these days. It's over 10 years old, and although it was fine when it was first introduced, it's just not good enough now. Okay, what problems? So they were saying कि ये जो सिस्टम है ये हमने 10 years पहले लिया था, तब वो अच्छे से काम कर रहा था, बट नाउ इट इज नॉट वर्किंग वेल, वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है. सो ही डिडंट मेंशन अबाउट टू मेनी यूजर, उसने यूजर का मेंशन ही नहीं किया. नेवर वर्कड वेल. देव सेड कि 10 साल पहले इट वाज वर्किंग प्रॉपर्ली. सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट एंड ऑप्शन सी become outdated, as he stated कि 10 साल पहले अच्छे से काम कर रहा है बट अभी नहीं कर रहा है. That means the system is outdated. Are you experiencing? Well, 20 years ago, the college was quite small, and we didn't have the numbers of students or tutors that we have now. So the system can't handle the increasing volumes. Well, there's a lot more data now, and it sometimes seems the system has crashed, but in fact, it just takes ages to go from one screen to the next. Right. Is that the only problem? Well, तो he is saying कि पहले इतना वर्कलोड नहीं होता था, पहले इतना काम नहीं होता था, बट नाउ जब वर्किंग ज्यादा स्टार्ट हो गई है तो जो सिस्टम है वो क्रैक हो रहा है एंड इट इज हैविंग प्रॉब्लम्स, और एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने में इट इज टेकिंग एजेस, मतलब वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज टू स्लो. दैट कैन बी करेक्ट क्योंकि ही सेज इज टेकिंग टू मच टाइम. स्टॉप्स वर्किंग, उसने ऐसा तो बोला नहीं है, वो काम करना ही बंद कर दे रहा है. सो दिस इज रॉन्ग एंड डिस्प्लेस इनकरेक्ट डेटा. डेटा की भी बात नहीं हुई है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट वन. Let's listen ahead. That's the main one, but there are others. In the past, doing the timetabling was quite simple, but now we have a lot more courses. And what's made it complicated is that many of them have options. Right, but the system should allow you to include those. Well, no, it doesn't. It was supposed to. And a few years ago, we did ask someone from the Technologies Department to fix it, but they never seemed to have the time. Are there any other issues with the system? Well, I've been given extra responsibilities. So he's saying कि issue क्या बन रहा है? तो there is not enough time for anyone to do it. उसने बोला था कि जो कोई he has not anyone, उसके पास कोई है ही नहीं जो काम कर सकता है. तो not enough time, that would not be an option. Then the system does not handle course option. This can be the correct one क्योंकि he said कि जो course है वो they are increasing, मतलब वो बढ़ रहे हैं, and the courses are constantly changing. Courses change नहीं हो रहा है, they are increasing. So the right answer will be B. The system should not handle the course options. And so I have even less time to do the timetabling. If there was anything you could do, Randir, to make the process more efficient, that would be really helpful. Well, it sounds like you could do with an assistant, but that's obviously not possible. So what about having an online system that students can use to do their scheduling? How would that work? Well, it may mean less choice for students, but we could create a fixed schedule of all the courses and options, and they could then view what was available. And work it out for themselves. That sounds great. Okay, so
We'll need to decide whether or not to improve the existing system. तो अब रणधीर क्या सजेस्ट कर रहा है कि हम नया सिस्टम बनाएंगे जिसमें we'll just write the names of the courses और students को select करेंगे. So option A, students should create their own timetable. Yes, उसने ऐसा suggest किया था. They should have someone to assist him. देव के पास कोई होना चाहिए असिस्ट करने के लिए, बट he couldn't find anyone, and तो ये ऑप्शन गलत है. The number of courses should be reduced. कोर्सेज कम करने से of course स्टूडेंट चले जाएंगे, so that is also not the correct answer. Correct answer is A, students should create their own timetables. Or to build a completely new system. Well, I'd much prefer to have a new system. Quite frankly, I've had enough of the old one. Okay, that'll probably take longer, although it may save you money in the long run. When were you hoping to have this in place? So Randhir is saying कि आप जो न्यू सिस्टम लोगे उसमें ट्रायल की तो बात की नहीं है, so that would be eliminated. Still have problems, he hasn't specified कि problem होगी या नहीं होगी, but he said कि जो cost होगा it would be very less, which means it would be more economical. So this would be the correct answer. Let's listen ahead. And the new intake of students will be in September. We need to start processing admissions in the next few weeks, really. Well, it will take more than a few weeks, I'm afraid. As an initial estimate, I think we'll be looking at April or May to improve the existing system. But for a new system, it would take at least 9 months. That would be October at the earliest. So अब इसमें उसने तीन ऑप्शन की बात की. ऑप्शन ए इज अ फ्यू वीक्स, बट अ फ्यू वीक्स इज यूज्ड फॉर कि अगर हम नया सिस्टम ले रहे हैं तो जो एडमिशन प्रोसेस है दैट वुड बी स्टॉप फॉर फ्यू वीक्स. सो बट हमारा क्वेश्चन है इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो दिस इज नॉट द करेक्ट वन. देन 4 to 5 months. नाउ ही इज सेइंग दैट दिस मंथ इज जनवरी, एंड अगर आप नया सिस्टम लोगे इट विल वर्क टिल मे, मतलब मई में वो काम करना इट विल स्टार्ट. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इट वुड बी 5 months. तो 4 to 5 months कैन बी करेक्ट. एंड ही टॉक्ड अबाउट 9 months, but it was not for improving the existing system. So B would be the correct answer. Let us have a look on next example. यहाँ पे it is example of you have to choose any 2 options from the given 5 options. So the question is, which 2 subjects did Martina like best before going to university? Martina को कौन से subjects पसंद थे before going to university? University जाने से पहले. Let's listen to the recording first. Oh, hi, George. How's it going? Hi, Martina. It's going well. How about you? How's university life? Well, it's great. Apart from the studying, of course. Yeah, me too. What are you studying? I seem to remember that you were going to do art. That was your best subject, wasn't it? No, not really. I just liked the teacher. He was French and had an amazing accent. My favorite subject was history. What is he saying? The boy is saying कि Martina liked art, but Martina ने deny कर दिया कि मुझे art नहीं पसंद था. I only liked it because of the teacher, and the teacher was French. The language was not French, and she said instead I liked history. So history can be one option. Then let's hear ahead. But I couldn't see what career that would give me. Oh, right. So what did you choose? Well, I found it really difficult to decide. I was really good at science, but I must admit, I never really enjoyed studying it. So, in the end, So she is talking about science. कि science मुझे पसंद था, but I did not enjoy learning science. मतलब मुझे science पढ़ना पसंद नहीं था. So this would also be eliminated. I decided to opt for English, which was my second favorite subject.
and I thought it would be more useful to me than studying anything else. So that's what I'm doing. She said she is studying English, which was her second favorite subject. So the answer would be history and English. Okay, that's it for today. And thank you for watching. Bye.